channel. This is Prada Jindal and I hope you guys are doing really amazing. So in this video I'm gonna trying out all the viral TikTok makeup hacks. So I'm very excited for this, and this video can be a bit long, so grab some snacks with you guys and watch this video till the end. Don't skip any part because you're gonna miss something really amazing things. So yes, if you're new on my channel, please subscribe my channel, hit that bell button for more notification. So without doing any further ado, let's just start the video. Yes, I'm gonna attach the clips here which I'm doing here. So first is this makeup base hack, and it makes your face look more matte and finished, and all the products are same जो भी हम सब यूज करते हैं, बस उसके सीरीज नंबर अलग कर रखे हैं. जैसे फर्स्ट हम प्राइमर यूज करते हैं ऐसे, सो अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग नंबर पे यूज किए गए उसके सीरियल नंबर से. सो येस, आई एम गोना ट्राई आउट, और मैं सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स यहाँ देने वाली हूँ. सो येस, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. The first product is this moisturizer. I'm going to use the Biotique moisturizer. Watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent So the second powder. product is this Fit Me Ka loose powder. And I just lightly really dab good. it all over my face. So Not too yes. much. Then And I'm going to dab it on my face. The NYX makeup setting spray, and I'm gonna spray it now on my face. And I'm just gonna let it dry on my face. Dry, and I'm gonna apply the Color Bar primer. So yes. And I can already feel very smooth क्योंकि प्राइमर लग चुका है और काफी ज्यादा बेस भी बन चुका था. So yes, I'm feeling very smooth on my face. And now I'm gonna apply the foundation very last step, and I hope अच्छा result हो इसका. As you guys can see, like it's so smooth here. And I am loving it. So yes, now the second hack is this. So yes, now I'm gonna apply it, and I'm using Maybelline Super Stay foundation, and this is really good. So yes. The base is done and I'm quite loving it. Like इसमें से मैंने अपना कंसीलर यूज नहीं किया है, which is a really big thing. और मेरे जो ब्लैकहेड्स वगैरह जो काफी सारे थे यहाँ पे, सारे सब कुछ अच्छे से हाइड हो चुके हैं, एंड इट्स जस्ट नॉट शोइंग. और मेरा जो अंडर डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से हाइड किया है. आई होप यू गाइज बी एबल टू सी, बट इट्स रियली नाइस. इट्स रियली नाइस. लाइक आई डेफिनेट यूज दिस हैक इन फ्यूचर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आप लोगों को मैट फिनिश चाहिए हो एंड पूरे दिन के लिए चाहिए हो, सो प्लीज ट्राई आउट. बट एक सजेशन दूंगी मैं कि मॉइस्चराइज अपने फेस को बहुत अच्छे से करो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, लाइक लूज पाउडर, सो विच मेक्स आवर फेस अ लिटिल ड्राई. सो व्हाट लाइक मॉइस्चराइज योर फेस वेरी नाइसली, क्योंकि फिर ड्राई हो जाएगा आपका फेस. बट आई एम क्वाइट लविंग दिस, एंड आई विल बी लाइक गिविंग 8 out of 10 बिकॉज अच्छा, बहुत अच्छा है ये. So yes, big thumbs up for this hack. Yes, the second hack is this. This is for cut crease. जब भी हम लोग कट क्रीज करते हैं तो हम लोग की जो एजेस होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, शार्प नहीं हो पाते. So this is really nice hack, and I'm gonna first make the cut crease, क्योंकि ऑफ कैमरा करने वाली हूँ मैं. It takes a lot time because. So yes, and then मैं इसको करने के बाद I'll be coming back and show you guys this hack. So yes. See, my cut crease is ready. I know it's not that perfect, but मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती थी. So yes, now this is ready, and now I'm gonna try this hack. मेरे पास निका के का ये लिक्विड आई शेडो है, which is really nice. So and इसका वॉन्ड इस टाइप का है.
बिल्कुल लाइनर जैसे हम आई लाइनर लगाते हैं इस टाइप का. सो नाउ आई एम गोना ट्राई दिस एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन माई हेयर आईलिड्स. सो यस, इसको मुझे मिरर चाहिए इसके लिए. सो यस. Here's a quick and easy trick if you feel like your cut crease just isn't even, isn't crisp or sharp. Grab any glitter liner and place the glitter between your crease. It cleans your crease and adds a sparkle. It's ready, guys. I hope you guys can see the lighting is not that good. I'm sorry for that, but yes, I'm going to show you guys in a proper lighting. Just wait. So yes, that's how it's looking and it's quite good. The lighting is not still better, but I hope you guys be able to see, but I'm really loving the results. So yes guys, that's how it's looking and it's quite good. Like बहुत अच्छा है कि ये. So I'll be giving it like 7 out of 10 for sure because ये बहुत अच्छा है क्योंकि कट क्रीज में काफी बार ऐसा होता है कि मतलब मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ वाले पे. So yes, it's a big thumbs up. So yes, the third one is for highlighter and we all love highlighter like anything. So yes, I'm gonna try this hack now. So yes, let's just try it. First we need to apply a highlighter and this is what I'm using. This is from my Maybelline Master Chrome and it's broke as my heart. So yes, now I'm gonna apply it on my face first. I need mirror for this and now I'm gonna apply it. Woohoo! Could you see that? Here's some makeup tips that you didn't even know you needed. So when applying highlight, after you apply the first layer, put setting spray on and then apply it again and it'll be 10 times. So yes, as it's done now, the first layer is done. अभी उस पे बोला है कि क्या कहते हैं, now we have to apply the makeup fixer on my face, but I don't think so that's a good idea क्योंकि as it's like a watery thing, so I'm gonna just spray it on my brush क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा. So yes, now I'm gonna brush it and then I'm gonna apply the highlighter again to make it look more glassy and more shiny. So yes. So yes, now it's done. Now I have to be a little quick with this before it dries. So yes, very little highlighter and okay. Okay, so it's done guys and I'm loving it क्योंकि it just make my face more glassy and बहुत अच्छा लग रहा है अभी. Like normal lighting में भी ऐसे ही show हो रहा है and it's such a good thing. I hope you guys able to see it, but it's so good. And yes, I would suggest कि instead of face पे स्प्रे करने से आप लोग ब्रश पे स्प्रे करो, that is more nice. So yes, I'll be giving it a good 7 marks क्योंकि अच्छा काम किया है ये काफी, और मतलब हाइलाइटर ज्यादा यूज नहीं हो रहा है. बट आई वुड लाइक टू गिव यू अ वन टिप कि आप लोगों को क्विक होना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका ब्रश काफी वेट है तो अगर आप ऐसे धीरे धीरे करोगे तो इल मेक अ पैच ऑन योर फेस विच इज नॉट सो गुड. सो येस, बट इट्स रियली नाइस हैक, सो बिग थम्स अप फॉर दिस. So yes, coming to the fourth and last hack of this day, and this is for lipstick, and we all love experimenting with lipsticks. So yes, I'm gonna try this out, and this is for ombre lipstick, like ombre lips. So yes, let's just do this. And as it says कि हम लोगों को पहले लाइनर मतलब आउटलाइनर करना पड़ेगा, and I don't use outliners. So yes, what I'm gonna do is now कि ये मैं नायका की ये मिनी लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ. ऐसे इसका वॉन्ड काफी पतला है तो इसलिए हम इसको एज ए आउटलाइनर भी यूज कर सकते हैं. सो आई एम गोना यूज दिस नाउ
So yes, let's just do this. Lip combo, grab Toasty from Morphe and outline your lips. Then go in with Huda Beauty lipstick in the shade Bored Meeting and apply it. The outline is ready. Now I'm gonna apply. For the lipstick is this Maybelline Color Joint Matte, and it's such a versatile shade. I really love this one. So yes, I'm gonna apply it now. But हम लोगों को सेंटर में ज्यादा डार्क करके नहीं लगानी, हम लोगों को लाइट लगानी है, एंड एजेस पे हमको लोगों को थोड़ा डार्क करके लगानी है. So yes, I'm gonna do that now. And yes, इसका बॉन्ड बहुत अच्छा है. Like इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है. सॉरी. So yes, as it's ready, now I'm gonna apply the last thing, and which is really good thing. So I'm pretty excited for this one. So this is the concealer, LA Pro Concealer. So yes, I'm gonna apply it in middle of my lips, यहाँ पे और यहाँ पे, and just dab it all over there. So yes. Oh. And now I'm just gonna dab it. So yes, it's ready. As you guys can see, the lighter shade here and the darker shade here, and it's so good. It's looking really nice. अगर हम लोगों को एक अच्छी तरीके से इसको यूज करें, लाइक आई रियली लव्ड द रिजल्ट्स, बट आई थिंक आई नीड टू ट्राई दिस वन मोर टाइम. तो यस, बट इट्स क्वाइट नाइस, एंड आई विल बी गिविंग इट लाइक 7.5, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है इसने. एंड यस, आई एम क्वाइट लविंग इट. लाइक concealer is so versatile thing. So yes, I'm really loving it. So yes guys, that is it for today, and I hope you guys like this video. Was it really helpful for you? And if you like this video, smash that like button and subscribe to my channel. Hit that bell button for more notification, so when I'll upload a video, you'll get notified. Comment down below how you guys like it, and if you wanna see part 2 of this video, let me know in comment sections. And अगर ये video 100 likes cross कर गई, which is not a big deal, but 100 likes cross कर गई, so I'll make a part 2, and that will be really fun video. So yes, and I'll post videos every week, so do consider subscribing my channel and follow me on Instagram because I'm super active there. So yes, see you in my next video. Bye.